ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। In this video, we will explain to you the workings of an option, its specifications, payoffs, and much more. Well, friends, एक underlying instrument के multiple strike prices हो सकते हैं based on the expectations of different market participants. For example, एक कंपनी A का स्टॉक 300 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस हो सकते हैं, जैसे कि 280 रुपए, 300 रुपए, 310 रुपए या फिर कुछ और. This concept of three different strike prices can be better understood if you know what is moneyness of an option. अब आप कहेंगे moneyness क्या है? So let me tell you. Moneyness यानी आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है या what the current scenario of your bet looks like. Moneyness की तीन कैटेगरीज होती हैं. पहली कैटेगरी है in the money. For a call option, if the spot price of an underlying asset is above the strike price of the option is said to be in the money. Put options के केस में अगर underlying asset की spot price उसके option की strike price से कम है तो उसको in the money कहते हैं. Moneyness की दूसरी कैटेगरी है at the money. एक कॉल ऑप्शन में अगर अंडरलाइंग एसेट की स्पॉट प्राइस उसके ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के बराबर यानी कि इक्वल है तो उस ऑप्शन को एट द मनी कहते हैं. और पुट ऑप्शंस में इफ द स्पॉट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज सेड टू बी एट द मनी. द लास्ट कैटेगरी ऑफ मनीनेस इज आउट ऑफ द मनी. In call options, this happens when the spot price of an underlying asset is below the strike price of the option. And in put options, you are out of the money जब underlying asset की spot price उसके option के strike price से ज़्यादा हो जाती है. Now let's understand all the three moneyness categories through one example. Now let's assume a trader decides to buy a call option of ABC Limited with a strike price of ₹100. Now, if the current market price of ABC Limited touches ₹100, the option is said to be at the money. अगर stock price 100 रुपए से ऊपर गया तो option in the money होगा, as it now has a value. But अगर stock price 100 रुपए से नीचे गया तो option out of the money हो जाएगा. अब देखते हैं कि what happens if a trader decides to buy a put option with a strike price of ₹100. It will be considered at the money if the market price also is near ₹100. पर वो in the money तब होगा जब ABC Limited का स्टॉक प्राइस 100 रुपए से नीचे जाएगा. अगर स्टॉक प्राइस 100 रुपए से ऊपर चला गया तो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाएगा. अब देखते हैं कुछ और ऑप्शन रिलेटेड टर्म्स. In order to give the option buyer the right to exercise at will, the option seller charges an amount from the buyer. This amount is called the option premium. Every option contract has an expiry date. Now, this is the day on which the buyer must decide whether to exercise the option or not. If not, the contract expires. Another key term to know in the options is the lot size. Lot size is the number of shares or units of the underlying asset covered in the option contract. For example, a lot size of 100 in a call option of ABC stock would mean the option buyer has the right to buy 100 shares of ABC at a predetermined price. So that was all about some key terms related to options. Now we'll learn a lot more about options in our upcoming videos. So stay tuned and take care. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.